Fine. So yesterday we finally entered into Arunachal Pradesh, and once we entered into Arunachal Pradesh, the plan was quite clear that first we will see the archaeological evidences that have been discovered from Arunachal Pradesh, which is important only for your prelims examination, as that comes under the broad topic of heritage. Correct? There was some confusion related to Eta Fort yesterday. Whatever I have read and whatever I have confirmed yesterday, correct again. So I find that Eta Fort from reliable sources, the answer should be Jitari dynasty, correct? But again, see, the APSSB commission, it is believed that it also asks the same question, Eta Fort, and it marks Sutia kings as the correct answer. Fine. So if we go for the by the technicalities and by the official answer key, I feel that it is better. Sutia king should be the answer for being safe, correct? So you should mark Sutia kings if the answer, if the question is asked. But obviously, if those questions are asked in APSSB, so we can relax that at least these kind of factual questions are not going to be asked in our APPSC examination. Correct? Reason is who built that, that if we do not have a concrete source of evidence, it can also be possible that maybe someone has reconstructed it later on. ये भी तो possibility है ना. But one thing is for sure that the Eta Fort, Bhismak Nagar, ये सारी चीजें they are pre-Ahom structures, right? Before the coming of the Ahoms, these are built, and let us just hope that these questions are not asked in our examination. This is all we can hope for. If it comes, then please follow the official APSSB answer that has been provided. Correct. Next, there are also some further detailing of excavation that has been done. I don't know the details of the excavations, and I don't think that in your first examination, which is having this APPSC syllabus, that much detail is going to be asked. Whatever detail is in public domain, just say we saw that here a snake head has been discovered. Correct? From which place? Vyaskund, Ramgarh, right? So that snake head that has been discovered, उसके बाद उसके ऊपर क्या क्या inscription है, these things are also there important. But again, there is no one source that we can study all these things correctly. How deeper will we go? And this deeper will obviously take place after this examination is concluded at least once. At least we get an idea what kind of questions can be asked, right? So based on that, we can go into the details. But for this time, I feel the superficial knowledge that has been there from the archaeological evidence part, that would suffice. If it does not suffice, so maybe one question, we can take a risk of one question. Correct? गलत हो जाएगा और क्या हो? Fine. उसके भरोसे तो एग्जाम निकाले नहीं जा रहे हैं ना हम लोग. We are not going to clear the examination by these 5-7 questions, and from these 5-7 questions, hardly 1 and 2 will be from history, because there is environment, there is geography, there is economy also. Correct? So इतना बहुत चलता है. मेंस में जब हम लोग आते हैं तो मेंस में facts are not that much important, and the overall policy, the approach becomes important. Correct? So इसीलिए जो हो गया सो हो गया, जाने देना है. Whatever is next, that is important for us at this present juncture. Correct? Now, once we start again from the basic part, the first thing that we have to keep in mind is that once we are into Arunachal Pradesh, we have to be our plan very clear. First, we are going to see the medieval history of Arunachal Pradesh. Immediately after that, we will see the modern history, and after the modern history part is over, we will see the evolution of this particular region into the state of Arunachal Pradesh. Correct? Fine. तो सबसे पहले हमने हेरिटेज देखा, फिर अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, medieval history of Arunachal Pradesh. Fine. So ancient history 0 है. Once we come to the medieval history of Arunachal Pradesh, few things has to be kept in mind. Again, what? Once we talk about the medieval history, it means the relationship with Ahoms becomes important. Fine. This is the only reference that you have. You have only the Buranjis that you can refer to get to know an idea of the medieval history of Arunachal Pradesh. So relationship with Ahoms. And once we talk about for purely prelims perspective, my friend, so there are 3-4 things which are important. The first thing that is important is Posa. With Posa, the second thing that is important is Pikes. With Pikes, the third thing that is important is
right? So mostly Posa, Pikes and Kotokis. These are the three terms which can be asked in your prelims examination, and from these three terms only the questions can be framed in mains in terms of analytical aspects, correct? So now once we see the relationship of medieval history of Arunachal Pradesh, we largely see that how Arunachal Pradesh tribes were having a relationship with the southern neighbors. Southern neighbors means Ahom kingdoms, and obviously there is no sense of unity that is to be there. Unity तो ऐसा बोल के होगा नहीं tribes में, तो tribes में unity नहीं है, तो सब कोई अपने मन से they are dealing separately. So here is the coming river, Akas living here, then Subansiri going into Brahmaputra. So Subansiri is dominated by the Nishis, fine. Then we have Siang, we have the Adis, Adi belt, Abors. Here we have Lohit. So Lohit mein we can say Mishmis, yes or no? And then we have Noa Dihing river, that is Noa Dihing, right? No Dihing river, पूरा नहीं मानना है. वहाँ पे we have the Naga regions, Naga tribes, correct? So all these things we have to see how their relationship they differed from time to time. Then again there is Mijis, Seddukins, right? Mijis and Seddukins are also found around that region. So this is how we have to understand. This is the medieval history that is there. Other tribes we don't find much evidence, correct? Because सारे के सारे इधर जो Kamtis हैं, they are belonging to the same group. Singphos, they belonging to the same. They are coming from Myanmar itself. So in look, by default they are loyal. Yes or no? By default they are loyal. So main situation that we have to study with this region is Mishmi, Abor, Nishi, Akas and Nagas. So the relationship will again be, see, understand, the dialect will be different because the region is different, fine. And once the dialect and the region is different, there is bound to be some confusion. What kind of confusion? The fertile land is obviously lying in this region, in Assam region, and in search of fertile land, this is a very common sense in history that these people will come down. भाई नमक के लिए तो आना पड़ेगा ना, बेसिक बर्तन खरीदने तो आना पड़ेगा ना, बांस के बैम्बू पे तो नहीं खाना बनाएगा, कितना दिन बैम्बू चावल खाइएगा. You have to have some copper, you have to have some utensils, you have to have some salt, you have to have some trade in other items. So obviously the tribesmen, the hillmen, they were lived by the agricultural advantage that was being provided by this particular region, correct? And once they were lived by that, once they were coming down, they were coming into conflict with the peoples of the plain. So frequent raiding was the norm, and in order to prevent the frequent raiding, a compromise was reached between Ahom kings and the tribes, correct? Now this compromise became to be known as the Posa system. इस कॉम्प्रोमाइज को बोला गया पोसा. बहुत सिंपली इसको समझिएगा. तो मेंस में पोसा का डेफिनेशन अलग हो जाता है. सम पीपल से पोसा वाज जस्ट काइंड ऑफ अ आउटकम ऑफ अ ब्लैकमेल सिस्टम, ब्लैकमेलिंग सिस्टम, जो ये लोग करते थे ब्लैकमेल यहाँ के लोगों को, और इन लोगों ने इनको सेटल करने के लिए. अब सोचिए आप अहोम्स के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट? यू आर टॉकिंग अबाउट अहोम्स माय फ्रेंड. अहोम्स जो ने पूरे आसाम को कंकर किया. If Ahoms would have wanted, if Ahoms would have tried, obviously it would not be. उतना लंबा गन पाउडर है भाई उनके पास, correct? They have gunpowder in 16th, 17th century, 16th century, 18th century. They have gunpowder. Now, if they have gunpowder, obviously the tribesmen will be no match for them. सोचने वाला बात है ना. तो some historians they believe that ये tribes लोग का winning था, इसने blackmailing लिया, और बहुत staunchly इसको criticize किया गया है कि no, it is something else. It is a kind of a negotiation, a win-win situation for everyone, so that you all live, you all survive, and you all can have a good life. So Posa was a kind of compromise. Posa में ये किया गया कि हर ट्राइब के साथ एक पोसा अग्रीमेंट साइन हुआ, और उस पोसा अग्रीमेंट में 25 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया हम आपको हर महीना देंगे. आपका ये रीजन है, प्लीज डोंट अटैक अस, करेक्ट? You be there and we will give you in return, we'll give you money, we'll give you items for you to have it, for you to consume it, correct? So Posa system is a kind of agreement which is reached with the people of the plain and it with the people of the hills, correct? After that, whenever Ahom kings they went to fight a war, whenever Ahom kings had to fight, these tribal people, right, these people of the plains who were not associated with any class, with the king, with the nobility, they were not associated, they used to provide soldiers for the kings to fight, okay?
नाउ सपोज करिए, ऐसे समझिए कि if I am the Maharaj of this particular entire region, obviously I have appointed small rajas, yes or no? हर डिस्ट्रिक्ट हम दिए हुए हैं सबको, राजा लोग को, and I am sitting somewhere here in the center. So if I have to fight someone from this part, I will ask this person and I'll ask this person to arrange some men and please come and fight for me. Feudal system, right? Arrange some men and please come and fight for me. So once you arrange some men, यहाँ का आदमी लोग अगर अरेंज कर रहा है, यहाँ का आदमी लोग अरेंज कर रहा है, तो इनके बुलावे पे 200 आदमी कभी भी आ जाएगा, 10 आदमी कभी भी आ जाएगा, 20 आदमी कभी भी आ जाएगा. So Ahom kings, they established a system and they said that कि this particular officer who will be known as Bora, right? This particular officer will have access to 10-20 soldiers always in his service. Fine. Then there will be an higher officer known as Saikia who will have an access to around 100 soldiers anytime under his tutelage. Correct? Then Ahom kings established a system and said that there will be an officer known as Hajarika, जिसका अंदर 1000 soldiers will be there. Who will be these soldiers? These soldiers are temporary soldiers. Correct? They are village men, and whenever they are called upon, they come to give their service to the state. Fine. And there are different officers. तो छोटा मोटा लड़ाई है तो हम बोरा को फोन किए. सदिया का एक बोरा है, सदिया के बोरा को हमने फोन किया कि भाई वहां चलना है लड़ाई करने. करेक्ट. लोहित एरिया है तो लोहित एरिया के अगर मान लीजिए 5 आदमी लड़ाई करने आ रहा है, राइट, या 10 आदमी लड़ाई करने आ रहा है नागा एरिया से, तो व्हाट आई विल से, आई विल कॉल द लोहित एरिया के बोरा को, बोलेंगे कि तुम चलो जाके फाइट करो मेरे लिए. कोई बड़ा आर्मी है लड़ाई करना है तो हम 10-15 बोरा लोग को बुला लिया अलग अलग, या फिर एक साइकिया को बुला लिए. कौन है हम? आई एम द अहोम किंग. फाइन. सो दिस इज हाउ दे वर ऑर्गेनाइज्ड. अब अहोम्स चले गए और बाद में लोगों ने यही टाइटल अपना ले लिया, तो क्लास असम में बन गया. तो जो इसके सरने में बोरा है यानी वो लोग थोड़ा लोअर क्लास, जिसके सरने में साइकिया है थोड़ा सा अपर क्लास, माने उनके जाने के बाद प्रेजेंट टाइम. एंड हजारिका तो विनो भूपेन हजारिका सेतु, ये सुनो. तो which is further south? If I ask you this question, which is further west, बोगीबील और भूपेन हजारिका? Which is westmost, westernmost? सबसे westernmost कौन है, बोगीबील या भूपेन हजारिका, या both are same? लेमजुम. Bogeybill is the other name of Bhupen Hajarika. Correct, incorrect? Bogeybill is the other name of Bhupen Hajarika Setu. Is this statement correct or incorrect? हे प्रभु, हे हरि राम, ये क्या हुआ? अरे, Bogeybill is the other name of Bhupen Hajarika Setu. Am I correct or incorrect? क्यों चुप क्यों रहे हैं, बताइए. ओ, पासीघाट वाला है आप ना, तो आप तो दोनों में से कोई भी नहीं जाता होगा ना, सिला पत्थर से सीधा. एदित बोलिए. अच्छा, दोनों अलग अलग है ना, ऑब्वियसली अलग अलग है, राइट. बोगीबील इज वेस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट इज भूपेन हजारिका सेतु. बोथ आर डिफरेंट, और दोनों के बीच में ऑलमोस्ट मुझे लगता है 100-150 किलोमीटर का डिफरेंस होगा. करेक्ट. इफ यू गो फ्रॉम हेयर, तो इफ यू हैव टू गो टू डिब्रूगढ़, यू हैव टू क्रॉस बोगीबील. करेक्ट. एंड फर्दर फ्रॉम डिब्रूगढ़ इफ यू गो टू रोइंग, then you have to cross Bhupen Hajarika Setu. Bhupen Hajarika Setu is the longest bridge in India, river bridge, right? Sea bridge के हिसाब से that is Bombay वाला अटल सेतु, that is 20-21 some kilometer. Bogeybill is the largest, longest river bridge in India. Sorry, Bhupen Hajarika Setu is the longest river bridge in India. Bogeybill is road also, rail also, both. तो हजारिका नाम है, हजारिका मीन्स किसी भी सरनेम के अगर हजारिका है तो हायर क्लास है आसाम. तो ये पहले का सिस्टम है. दिस इज द सिस्टम दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ये एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन वेस्ट ईस्ट करके आएगा, हम आपको अननेसेसरी ज्योग्राफी में लेके चले गए, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू नो कि दिस इज व्हाट, दिस इज द सिस्टम ऑफ पाइक्स. पाइक्स आर जस्ट सोल्जर्स हु फाइट फॉर टेम्पोररी गेन्स एंड सोल्जर्स आर assimilated अंडर लीडर. द लीडर्स आर नोन बाय डिफरेंट रैंक्स, बोरा, साइकिया एंड हजारिका. दिस सिस्टम इज नोन एज पाइक सिस्टम. मींस द होम किंग्स ऑर्गेनाइज्ड, और जैसे बोरा है तो बोरा के अंदर में कुछ आसाम के भी ट्राइब्स हैं, अरुणाचल के भी ट्राइब्स हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द बोरा. करेक्ट.
साइकिया है तो उसमें उसने कुछ अबोर हिल्स के भी लोगों को लिया है फाइटिंग करने के लिए, मिशमिश को भी लिया है फाइट करने के लिए। आर यू गेटिंग इट? उस रीजन के जो साइकिया है उनके अंदर। तो ये ट्राइबल लोग क्या है जो किसी क्लास में नहीं आ रहा है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द किंग एंड द किंग इज गिविंग देम मनी। Fine. A paikdar is giving them money. So this is about Paik. Next situation is about Posa. Posa is just a kind of system जहां से काम आपका खत्म हो जाएगा। और वेरी गुड, टाइगर जिंदा है कह रहे हैं। राजखोआ एंड फुकान, इनका भी रैंक और ऊपर जाता है इसके बाद। करेक्ट, राजखोआ, फुकान। तो इस तरीके से इनका क्या, जैसे अकबर ने मनसबदारी सिस्टम लॉन्च किया, जाट एंड सवार, उसी तरीके का सिस्टम यहाँ पे भी फॉलो होता है, होगा। उसके बाद सवाल आता है कोतुकीज का। व्हाट इज कोतुकीज? कोतुकीज मीन्स the person who will translate the Ahom king language into the village of Nishis, right? He will be a kind of intermediator. जैसे शादी होना है मान लीजिए दो आदमी के बीच में, अरेंज मैरिज, तो लड़की की तरफ के कोई आदमी जानते हैं और लड़के वाले को भी जानते हैं, वो तो कॉमन आदमी है, तो व्हाट ही डज, आगे आगे करने का काम करते हैं वो, राइट? तुरंत उससे बात कराएंगे, उनसे बात कराएंगे और शादी फिक्स हो जाएगा। तो जब शादी होने वाला होता है या शादी फिक्स कोई कराया है, so the बीच वाला पर्सन गेट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ना, लड़की वाला भी उसको उनको दे रहा है, लड़का वाला भी उनको दे रहा है, क्योंकि ही इज द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट मैरिज। और शादी होने के बाद अगर कुछ हो गया खटपट, तो सबसे ज्यादा गाली सुनने वाला भी आदमी बीच वाला ही होता है, राइट? हर जगह पाया जाता है वो आदमी। तो हम लोग के बिहार में उसको अगुआ बोलते हैं, अगुआ जो मीडिएट कराए दो आदमी के बीच में। तो वही काम पोर्तुगीज का होता था। हु आर पोर्तुगीज? दे वर नॉर्मल पीपल हु आर लिविंग इन द प्लेन्स, दे आर एजुकेटेड पीपल, they have a wide link, and because of that link they are very handy persons for the king, right? So these people are the intermediary people between the tribes and the Ahom kings. Are you getting it? So write some SBI point about prelims that can be asked. ये हो गया बेसिक, ऊपर ऊपर नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है? इन तीनों का डेफिनेशन नोट्स में along with the commentary has been given, but for prelims perspective I am going to give you few things, just write it down for prelims. देखिए, under the Paik system, every male, not everyone, every male from 15 to 50 years, every male from 15 to 50 years who did not belong to the royal court, COURT, the royal court, or who was not a slave, was known as a Paik, Paik, was known as a Paik. And the entire Paiks, PIKs, and the entire Paiks of every village was organized into four groups, known as goats, GOTS. ठीक है, अब देखिए क्या है। अब एक गोत को मान लीजिए किंग ने बुलाया, वार करने चलना है, तो उस गोत का जितना भी फैमिली और बच्चा है, बाकी तीन गोत उसको टेक केयर करेगा। जैसे देखिए इस क्लास में मैंने 4 ग्रुप में बांट दिया, फाइन, और पूरा का पूरा जैसे हमको लड़ाई करना है तो 2 ग्रुप का जरूरत पड़ेगा। तो ग्रुप है हमेशा वो, जैसे ये 5 आदमी का एक ग्रुप है, तो देयर विल बी 1 ग्रुप। इफ आई नीड देम आई विल कॉल देम, व्हाट विल हैपन टू देयर फैमिली? अदर गोत हु आर नॉट कॉल्ड इनटू सर्विस, दे विल टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। अगर 1-2 आदमी चाहिए तो बाय रोटेशन दिस टेक्स प्लेस। जैसे किंग ने अभी बुलाया तो इनके ग्रुप से एक आदमी चला गया, नेक्स्ट टाइम बुलाया उनके ग्रुप से एक आदमी चला गया, मतलब लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है, करेक्ट? 4 गोत्स, ओके? सो दिस इज हाउ दे
how they were organized. उसके बाद लिखिए during this time the Pikes were organized as per the clans. The Pikes were organized as per the clans, CLANS, as per the clans. But later on, the Pikes were regrouped. Into further divisions within the clan, known as Khel, KHEL, known as Khel, KHEL. Fine, known as Khel. Therefore, the term Goth, GOTS. Therefore, the term Goths, comma Khel, KHEL, Khel. It belongs to the Paik system. And the Ahom kings and the Ahoms, खाली Ahom kings जरूरी नहीं है, and the Ahoms gave them land in return, to cultivate, ठीक है, land in return to cultivate. ब्रैकेट में मान लीजिए क्वेश्चन आता है राइट कि पाइक जो पाइक्स हैं, जो पाइक कौन हुए, माने सोसाइटी में कितना आदमी पाइक होता होगा अहोम्स के समय, सोच के देखिए तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द सोसाइटी would be pikes. Who are pikes? First of all, either if you belong to the royal house, royal court, या तो आप नोबिलिटी में बिलोंग करते हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर स्लेव हैं, तो आप पाइक नहीं हो सकते हैं, करेक्ट. बाद बाकी पुजारी आप हैं तो पाइक नहीं हो सकते हैं, है ना. मतलब रॉयल कोर्ट से रिलेटेड फंक्शन अगर आपका है तो आप पाइक नहीं है. स्लेव हैं आप तो पाइक नहीं है. अब स्लेव के अलावा जितने भी लोग हैं वो लोग पाइक हैं. तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी अंडर पाइक सिस्टम? मेजोरिटी और माइनॉरिटी? मेजोरिटी, ऑब्वियसली मोर देन 80-90%. कौन ही बचेगा यार. तो सब के सब पाइक हैं. एक चीज का ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आने के मामले में, फैक्चुअल क्वेश्चन का प्रिपरेशन मत कीजिएगा. ये फैक्चुअल क्वेश्चन में सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अपने हाथ में नहीं है दोस्त, है ना, और कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा. तो क्वेश्चन हम जो अब ईटा फोर्ट अगर आ गया है एपीएसएसबी में, तो मेरा तो मानना है और बहुत विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि एपीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा. ठीक, वन लाइनर फैक्चुअल. पाइक से अगर घुस के, क्योंकि देखिए पाइक सिस्टम पूरे इंडिया में चल रहा है उस समय, और अहोम्स इतना बड़ा नाम है जो 600 साल तक रहता है, करेक्ट. इसका पैरेलल है हर चीजों के साथ. अगर क्वेश्चन पूछने का ही है तो ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे हिसाब से. तो पाइक में हमेशा ध्यान रखिएगा, स्लेव्स वर नॉट पाइक्स बिकॉज स्लेव्स हैड अ जॉब, करेक्ट. स्लेव्स वर नॉट लिविंग इन द विलेज, होगा. तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज पाइक. एवरी पाइक वाज गिवन सम कल्टिवेबल लैंड. इट मींस लैंड बिलोंग टू whom? टू द होम्स. लैंड बिलोंग टू द एम्पायर. बात समझ में आ रहा है? यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ऑब्जर्वेशन का है, यहां से ध्यान रखिए. हर वो आदमी जो 15 से 50 साल तक का है, जो स्लेव नहीं है, जो रॉयल फैमिली में नहीं है, वो पाइक है. अगर वो पाइक है तो इस मींस द लैंड इज गिवन टू हिम बाय द एम्परर, मतलब बाय द किंग. इट मींस द लैंड बिलोंग्स टू द किंग. आर यू गेटिंग इट? ये ध्यान रखना है. सब निकलेगा, एक चीज से दूसरा चीज निकल रहा है, इसका मतलब हुआ. अब दूसरा चीज यहां से क्वेश्चन आने का चांस ये है, मनसबदारी. यू रिमेंबर अकबर का, वाज द लैंड हेरिडेटरी और नॉट हेरिडेटरी? मनसब्स याद है? हाँ, क्यों लाले इतना रात में पढ़ता है क्या? तकुफ
क्या हो गया? हेरिडेटरी था, ट्रांसफरेबल था? ऑनलाइन एक्सपर्ट्स बोलिए, सब फैक्चुअल एक्सपर्ट लोग हैं ऑनलाइन। जहां थोड़ा थ्योरी घुसने लगा तो शांति हो गया। लिखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट वाज नॉट हेरिडिटरी, राइट। पाइक सिस्टम मतलब जो लैंड मिलता था पाइक्स को, वो हेरिडिटरी नहीं है, दे वर नॉट हेरिडिटरी। करेक्ट? सो दिस इज अबाउट द पाइक्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। उसके बाद कोतकीस के बारे में कुछ नहीं जानना है, पीटी में बस आपसे पूछा जाएगा कि ये सब सिस्टम। और देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर फैक्चुअल पूछना ही है इसको, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क इज कि हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पोसा। फाइन, तो इसका सोर्स, और अगर आप असम के किसी स्टूडेंट से पूछिए, असम में कोई पूछेगा तो वो लोग एग्जैक्ट एकदम खोज के बताएगा, है ना। बट आरजीयू का जो किताब है नॉर्थ ईस्टर्न हिस्ट्री, उसमें प्रताप सिंघा का नाम मेंशन है, करेक्ट। लेकिन ये नहीं कहता है कि प्रताप सिंघा इंट्रोड्यूस पाइक या पोसा, कहता है कि प्रताप सिंघा रीऑर्गेनाइज द पोसा सिस्टम। आर यू गेटिंग इट? बट स्टिल आई फील दैट अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर that Pratap Singha will be the answer if they ask you a question कि who has done this. But it is a system जो बहुत समय से चला आ रहा है, अब उसको कोई रीऑर्गेनाइज करके बेहतर बना देगा तो उसको हम लोग क्रेडिट देते हैं। बट मेरे हिसाब से ये सब जो वेग एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ के, रेदर देन दे कैन आस्क कि व्हाट वाज दिस सेटअप एक्चुअली नोन एज। क्या ये सोशल इकोनॉमिक सेटअप था, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, यस और नो, ये है क्या बेसिकली ये सिस्टम। तो कोतकी मने एजेंट, पाइक मतलब बहुत सुंदर सिस्टम है ये, इसका पैरेलल है इंडियन हिस्ट्री में। और पोसा सिस्टम इज जस्ट अ सिस्टम ऑफ नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज, यू कैन say that. This is all you have to know in the medieval history part of Arunachal Pradesh, correct, till the Ahoms were there. छिटपुट लड़ाई झगड़ा है, बट किसी का नाम नहीं पता है और लड़ाई झगड़ा है ही। None of the tribes they had problems with the Ahoms. एक बार जब ये पाइक और पोसा, जब ये पोसा सिस्टम आ गया, so it was very clear, correct. पोसा सिस्टम आने के बाद सारे ट्राइब्स का लफड़ा झंझट झगड़ा ये सब बंद हो गया अहोम्स के साथ, और उसके बाद हम लोग को कोई भी इतिहास अरुणाचल प्रदेश के बारे में नहीं जानने को मिलता है जो पीटी के लिए हम लोग पढ़ सके, ठीक है। अब सीधे लिखिए, ट्रीटी ऑफ यांदाबो, ट्रीटी ऑफ यांदाबो। लिखिए, आफ्टर द एसबीआई डिक्टेशन है, हाँ ध्यान से इसको लिखिएगा, यहीं से ट्रांजिशन होता है मेंस में। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांदाबो इन 1826, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांदाबो in 1826, when the British took over the control from Assam, from Ahoms, when the British took over the control of Assam, from which king? Now PT oriented, which king? किस king से लिया गया 1826 में कंट्रोल ऑफ असम? ऑप्शन दें। When the British took over the control of Assam in 1826 from which king? ये होगा, ये नहीं होंगे तो आकाश के राजा हैं बाली नारायण, बहुत पहले का कहानी है। बाली नारायण प्रताप सिंघा के समय में थे, दरांग के उनको बनाया गया गवर्नर, तो ये दोनों तो है ही नहीं। अब बचता है गदाधर और पुरंदर। लिखिए, थोड़ी दिमाग मत लगाइए, क्या लिखे? what you wrote? Over the control of Assam from Purandhar Singh,
फ्रॉम पुरंदर सिंह, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बॉक्स में डाल लीजिएगा, राइट, फ्रॉम पुरंदर सिंह, they realized that the tribes of the frontier were very aggressive. The tribes of the frontier were very aggressive because of the fall of government authority. Because of the fall of government authority, so they handed over the civil administration. So they handed over the civil administration to Purandar Singh. To Purandar Singh, they handed over the civil administration to Purandar Singh. But within 5-6 years, Purandar Singh failed. Purandar Singh failed, and finally, the territories of Purandar Singh, were placed directly under British officers. And the British attitude towards this region was that of non-interference. Towards this region was that of non-interference. As Lord Dalhousie said that the game is not worth the candle. The game is not worth the candle over the relationship with the frontier tribes. Over the relationship with the frontier tribes. Over the relationship with the frontier tribes, and therefore the entire region was divided. The entire region was divided into districts only after 1942. Only after 1942. 1942, करेक्ट. यानी 1840s के आसपास से जो नॉन इंटरफेरेंस शुरू हुआ, वो नॉन इंटरफेरेंस लगभग 100 साल चला, और 1942 में पहली बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बना. डिस्ट्रिक्ट आप कब बनाते हैं? In order to administer an area. Are you getting it? When you have an interest in that area. Correct? So भाई आपका जो जनरल है वो कह रहा है, डलहौजी कह रहा है, गेम इज नॉट वर्थ द कैंडल. जैसे बचपन में हम लोग जब मम्मी कैंडल या लालटेन जलाती थी, फिर रिमेंबर ना, और हम लोग पढ़ते नहीं थे, तो कुछ लोग बोलते थे इतना तेल तुम वेस्ट कर रहे हो, किसी काम का नहीं है. गेम ये लाइट जला के, कैंडल जला के हम लोग
स्पाई किलर खेलते थे, रिमेंबर द गेम स्पाई किलर, यू डोंट रिमेंबर? राजा मंत्री चोर सिपाही, याद है? तो मतलब कैंडल जला के राजा मंत्री चोर सिपाही खेल रहे हैं बच्चे, यानी दे आर वेस्टिंग द कैंडल, करेक्ट? से बहुत फेमस स्टेटमेंट है डायलॉजी का कि इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना is not worth the candle, right? Means the gain that is going to have from playing this game, right? The gain is not going to give you that much return जितना इन्वेस्टमेंट हम लोग कैंडल में खर्चा कर देंगे. So this shows that for the next 100 years डिस्ट्रिक्ट बना ही नहीं आप. तो डिस्ट्रिक्ट नहीं बनने का मतलब इन्फ्रेंस ये ड्रॉ करते हैं हम लोग मेंस के एग्जाम में कि ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स का ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस वाज वेरी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ द ट्राइब्स. बिकॉज जब राजा चेंज हुआ, राजा के साथ आपका अच्छा रिलेशन है, और राजा चेंज हो जाता है जब अहोम्स का, उसके बाद द ट्राइब्स बिकम वायलेंट. आकाश दे डोंट गिव एनी रिस्पेक्ट, अबोर्स दे डोंट गिव एनी रिस्पेक्ट. अबोर्स का इनफैक्ट ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस चलता था तिब्बतियंस के साथ, फाइन. नागा लोग दब के था, अब नागा लोग चढ़ने लगा धीरे धीरे कि भाई ये लोग अहोम्स लोग हम लोग को, चलो हम लोग को इशू करता था खत देता था लैंड, और हम लोग मस्त उसमें चिल आउट रहते थे. नाउ ऑल दिस सिचुएशंस हैव चेंज्ड, the social relations were changing and the tribes were not ready to welcome the Britishers. As a result, Britishers followed the policy for the next 100 years, that the policy of non-interference. Correct? लिखिए उसके बाद एक लाइन और उसमें लिखिए, further in order to exercise some control, little here and there, expeditions, EXPEDITION, little here and there expeditions were carried on by the Britishers, okay, full stop. तो जो भी चीज हम लोग को अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती है, अब दिखाई देती है आजादी के बाद, फाइन है. अब आजादी 1840 से लेकर 1947 तक लगभग 100 इयर्स. व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड 3-4 प्रीलिम्स फैक्ट. क्या क्या 3-4 प्रीलिम्स फैक्ट? आदि में हुआ द फ्रीडम फाइटर इन एंग्लो अबोर वार्स, करेक्ट? एंग्लो आका वार्स, हु आर द फ्रीडम फाइटर्स? एंग्लो मिश्मी वार्स, हु आर द फ्रीडम फाइटर्स? आर यू गेटिंग इट? एंग्लो गारो वार्स, हु आर द फ्रीडम फाइटर्स? एंग्लो खासी वार, हु इज द फ्रीडम फाइटर? इसी तरह का कहानी हम लोग को 100 साल दिखाई देता है, माने व्हेन इट कम्स टू द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट. आर यू गेटिंग इट? समझ रहे बात? तो नॉन इंटरफेरेंस का पॉलिसी है, हमको मतलब नहीं है तुम लोग मरो या जो करो. लेकिन आसाम में जो कि फर्टाइल प्लेन है, तो हम लोग ठीक ठाक उसको रखेंगे, सिंपल लॉजिक है. लेकिन समय आता है 1910, वर्ल्ड वार 1 का पहले, और वर्ल्ड वार 1 के पहले समथिंग चेंजेस इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, and because of that change, again the Britishers, after a isolation of some 50 years, they again send anthropologists, they again send people in this particular region, and then the interest towards Arunachal Pradesh is developed. So वहां पे एक दो प्रीलिम्स का फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आर यू गेटिंग इट? बात समझ पा रहे हैं? अब ये हो गया आपका ओवरऑल. अब ये हमारा ट्रांजिशन के लिए गेटवे है, एंड फ्रॉम दिस गेटवे वी कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ मेंस, जिसमें ऊपर लिखे ट्राइबल रिलेशंस विद ब्रिटिश आफ्टर 1826 या आफ्टर ट्रीटी ऑफ यांदा. ब्रिटिश एंड द ट्राइबल्स, ऐसे करके लिख सकते हैं, ब्रिटिश एंड द ट्राइबल्स. नाउ सी द गेम हियर. ये सब लाइन याद रखिएगा. गेम इज नॉट वर्थ द कैंडल. हाँ, हर जगह चालू होगा, हर जगह ये लागू हो सकता है मीन्स में. नाउ सी, in this region which country is here? If this is Tawang, right, which country is this? Bhutan. Bhutan में कौन है? तो Bhotias are there. Does Bhutan shares a boundary with अपना असम? Obviously, why not? ये पूरा तो असम ही है ना. This is असम. लिखिए फर्स्ट पॉइंट, उसमें लिखिए मेंस ओरिएंटेड है दोस्त. हाँ, समझिए ध्यान से.
अब जो भी हिल का रीजन है, ऐसा थोड़ी है कि अरुणाचल का है ट्राइबल लोग नीचे घुस रहा है, साउथ जा रहा है, ये लोग भी तो जाएगा, मानस रीजन इज देयर ना, दे विल आल्सो कम, दे विल कम आल्सो कम साउथ. लिखिए before British came to Assam, before British came to Assam, there was a fight between Bhotias and the Britishers. There was a fight between Bhotias and the Britishers. ठीक है, क्या लिखे? Bhotias and the Britishers. एक वो एक्चुअली बहुत फ्लैटरी वाला कमेंट आ गया था बीच में, तो आई लॉस्ट ना, इसीलिए ज्यादा ये नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ना है. क्या था? And Britishers captured the Duars, and Britishers captured the Duars. दुआर किसको बोलते हैं दोस्त? दून्स एंड दुआर्स, करेक्ट. लोअर हिमालयस का जब फॉर्मेशन होता है उस केस में हम लोग दुआर्स बोलते हैं. तो कूच विहार, अलीपुर द्वार, ये सब रीजन क्या है? दुआर रीजन है, वेरी फर्टाइल, करेक्ट. अब द्वार का मतलब यहाँ पे आप चिकन नेक कॉरिडोर के आज के टाइम के से ले सकते हैं, राइट. द चिकन नेक कॉरिडोर, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इट वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स. सो ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड द दुआर्स and to ensure Bhutias did not attack, and to ensure Bhutias did not attack, not Bhutia, Bhutias did not attack, and to ensure Bhutias did not attack, they entered into a system of revenue sharing. उसके बाद लिखिए सेकंड पॉइंट, माने ब्रिटिशर्स ने बोला कि तुम हिल के थोड़ा सा और दूर आके, माने दुआर रीजन में आके, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस पे आके तुम इस गांव से तुम टैक्स कलेक्शन करो, इस गांव वाले लोग तुमको गावरी, मीट, ये सब तुमको देते रहेंगे, करेक्ट. तो ये सब चीज तुम करते रहो, लेकिन ये सब रेड पेड वाला काम मत करो, करेक्ट, स्टॉप. तो ब्रिटिशर्स एंड द भोटियास, और ब्रिटिशर्स ऑलरेडी हैड एन एक्सपीरियंस विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये हिल रीजन में होगा. अब देखिए क्या है, जस्ट कॉन्टिजियस, राइट. कंटिजियस या कंटिन्यूअस में अगर आप देखेंगे तो आकाश आर ऑल्सो है, फाइन. लिखिए contiguous, contiguous, contiguous to Bhutan, lies the Aka Hills, contiguous to Bhutan lies the Aka Hills, and just like the Bhotias, Akas too came south. Just like the Bhotias, Akas too came south here down. Just like the Bhotias, Akas too, TWO, came down for plundering British subjects. And here Raja Tagi, reached till Guwahati. अब ये एक फैक्ट है जो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है आकाश में, ठीक है. तो राजा तागी थे, वो ब्रिटिशर्स के पास चले गए, रेड करते करते गुवाहाटी में एनेक्स कर लिया ऑलमोस्ट, राइट. नॉर्दर्न गुवाहाटी को किस तरह से गए होंगे भाई? तेजपुर वाला रूट, कामिंग का है ना भाई, किधर से जाएगा? उधर से नहीं जाएगा ना, कामिंग नदी को पकड़ते हुए. नाउ व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कामिंग इन असम? जिया भराली, रिमेंबर इट, फाइन. नाउ सो राजा तागी इज इंपॉर्टेंट देयर. फाइनली इन 1888 अग्रीमेंट सक्सेसफुल, इसे शॉर्टकट में लिख लीजिए, शॉर्ट हैंड में, अग्रीमेंट सक्सेसफुल. फाइनली इन 1888 agreement with the British successful, and they never gave trouble.
उसके बाद लिखिए similarly Nishis were also raiding the villages at the foothills. Nishis are also raiding the village at the foothills. अब निशी कौन सा विलेज को रेड करेगा? फुटहिल्स मतलब क्या? वो बंदरदेवा। अरे असम और अरुणाचल का बॉर्डर बंदरदेवा से तुरंत पहाड़ आ जाता है ना यार। व्हेनेवर यू कम बाय ट्रेन और बाय, चाहे होलोंगी से आप एंटर कीजिए या बंदरदेवा से एंटर कीजिए, पहाड़ वहीं से शुरू होता है, लगता है नेचुरल बाउंड्री है। तो निशी लोग कहाँ रह रहा है? द्वैमुख। बहुत रह गए तो कारसिंगसा ना, और बहुत चले गए तो बंदरदेवा। अब बंदरदेवा तो ऑलरेडी हिल है, मतलब फुट हिल्स है। अब वहां से आप कहाँ रेड करिएगा? तो लखीमपुर, राइट। सो नॉर्थ लखीमपुर को ये लोग रेड करता था। फाइनली अग्रीमेंट हुआ, और अग्रीमेंट के बाद ये डिसाइड हुआ कि लखीमपुर में ही आप लोग रह जाओ, इतना ही पसंद है ये जगह, तो रेड करने का क्या जरूरत है। तो आज के डेट में भी 2 निशी का गांव वहां पे है। यू नो दैट फैक्ट और नॉट? 2 निशी विलेजेस आर देयर इन लखीमपुर ऑफ असम। व्हाट इज द नेम? ब्रिटिशर्स ने बसाया उस गांव को, बोला कि ठीक है यहीं रह जाओ आप लोग, क्यों रेड रोड कर रहे हो, यहीं पर रहो, रेवेन्यू शेयर करो, सेम भोटियाज के साथ रिलेशनशिप हम लोग अपनाएंगे, हमको मतलब नहीं आप लोग से, बट डोंट डिस्टर्ब अस, राइट, विल नॉट इंटरफेयर, यू शिफ्ट हियर इटसेल्फ। देखिए उसमें निशी क्या लिखे? विलेज एट द फुटहिल्स नियर लखीमपुर एंड बाय 1850s after the agreement in 1850s, year नहीं पता है, by 1850s after the agreement some Nishi families came and permanently settled in North Lakhimpur. ब्रैकेट में दुरपांग निशी विलेज, जरूरी नहीं है, पर लिख लीजिए दुरपांग। और भी एक नाम होगा, उसको खोजिए, कारसिंगसा वाला लोग से पूछे, उन्हीं का कोई गया होगा। दुरपांग निशी विलेज नॉर्थ लखीमपुर में है। सेटलमेंट करा दिया ब्रिटिशर्स ने वहां पे, बोला कि आप ऊपर क्यों जाना है ना, जब कुछ है ही नहीं तो यहीं पे रहिए। फाइन। नेक्स्ट थर्ड, मतलब निशीज के बाद अबोर्स। कम टू अबोर्स, उसमें लिखे अबोर्स वर द मोस्ट पावरफुल। अभी खराब पाने वाला बात नहीं है, हाँ, इसको कोई नहीं खराब पाएगा कि ये निशी पावरफुल है ना, राइट। सबको अपना अपना एरिया में किंग है। देखा जाए तो आकाश के लिए बहुत रिस्पेक्ट जाग रहा है ना, कि गुवाहाटी तक चला गया हम लोग ना। बट एनीवे, निशीज वर मोस्ट पावरफुल, सॉरी, अबोर्स वर मोस्ट पावरफुल, मोस्ट रिस्पेक्टेड उस समय। अब अरुणाचल प्रदेश में देखिए ना भाई, एडमिनिस्ट्रेशन जब से शुरू हुआ है तब से तो 2 ही ट्राइब निकल रहा है ना, अपातानी और आदि। बाद बाकी तो बाद में ना धीरे धीरे लेट रिसर्जेंस हो रहा है ना सबका। मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड, अगर आपको नहीं मन करे लिखने मत लिखिए, राइट। लिख दीजिए कि ओके गुड, दे आर मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड and they had a complete monopoly of all the fishes and the golds. They had a complete monopoly of all the fish and the gold. अब रीजन गोल्ड का क्यों? प्लेसर डिपॉजिट्स, यू अंडरस्टैंड द प्लेसर डिपॉजिट फॉर्म। सो गोल्ड और फिश जितना भी है ब्रह्मपुत्रा से निकल रहा है। अब देखिए ना, ब्रह्मपुत्रा का भी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना दोस्त। यारलुंग सांगपो कम्स, यहाँ से घूम जाता है। अब ऑब्वियसली हियर इज द डामरो पर्वत, एंड डामरो पर्वत पे परमेज आर देयर। बहुत दिमाग बहुत है तो यहीं से मछली को देखना शुरू, राइट। यहीं से मछली को देखना शुरू, यहीं से गोल्ड को देखना शुरू, और जितना भी प्लेसर डिपॉजिट में गोल्ड यहाँ आ रहा है, एक छत्र जिसको बोलते हैं कंप्लीट मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल दे आर हैविंग द। फिशिंग में तो यू नो दैट कि आदिस के बाद ही सेकंड नंबर किसी का आता है, करेक्ट, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज ना। तो उसका लिखिए उसमें कंप्लीट मोनोपोली ओवर द गोल्ड एंड फिश। न्यूमरस विलेजेस in the plains came to be inhabited numerous villages in the plains came to be inhabited
by gold washers, and fishermen belonging to the tribes known as Bihus, the tribes known as BWHAS in the plain area, right? Sadia region. In the plain area, Bihas who visited who visited who visited Dihang who visited Dihang and paid tribute to the Abors and paid tribute to Abors and paid tributes to the Abors for their superiority for their superiority. अब आधे लोग अपना बेल्ट में है, हाँ खराब नहीं पाना है, फाइन, इधर घुस के नहीं सुपीरियर है, अपना बेल्ट में सुपीरियर है, फाइन। तो ऊपर से जितना मछली गोल्ड ला रहा है ये लोग ला के दे रहा है, ए हरिंग तुम करो ना, इसको साफ करके लाओ, हाँ हम तुम लोगों को खोज के देगा, हम देख रहा है, खोज के देगा, तुम करो। तो ये लोग यहाँ मस्त साफ कर रहा है, लीजिए ना, अरे सर लिया जाए, और ये लोग लेके आ रहा है गोल्ड साफ करने के बाद ऊपर, राइट, और बैठा है ऊपर राजा लोग, और राजा लोग बैठने के बाद शासन दे रहा है। तब तक क्या हुआ, सुनी कहानी सुनाते हैं, ऐसा ही थोड़ी लिखा दिए भाई, 50 पेज का एक समरी निकला है ना, 5 लाइन। क्या हुआ, एक दिन एक बिहा को मैंने गोल्ड दिया तो गोल्ड कमती हो गया, अब चोरी तो होगा, राइट, तो गोल्ड थोड़ा कम आया ऊपर में साफ करने के बाद, तो गुस्सा में केबांग का मीटिंग हुआ, राइट, आधे केबांग के मीटिंग में डिसाइड किया गया चल के बिहा को पकड़ के लाना है। तो टाटा योद्धा स्टार्ट हुआ, और टाटा योद्धा में बिहा उसका परिवार को लेके अबोर लोग अपना हिल में आ गया, सियांग गैंग का हेडक्वार्टर में आ गया। तब तक क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को खराब पता चल गया, ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई हम लोग का एरिया तो तुम लोग को हम फिक्स किए ना, तुम नीचे आके हम लोग का आदमी उठा रहा है प्लेन का और ऊपर चला जा रहा है। तो झगड़ा होता है सबसे पहला, बोला जाता है इसको एंग्लो अबोर वॉर। ब्रिटिशर्स को मजा नहीं लगा इसमें, एंड ब्रिटिशर्स बिकॉज दे पिक द बिहार्स, राइट, अबोर्स, ब्रिटिशर्स एंड अबोर्स दे क्लैश फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर दिस पर्टिकुलर इशू, करेक्ट। अब उसको फ्रीडम फाइटर्स बोलिए, उसको अपना ईगो हर्ट बोलिए, राइट, ये नॉर्मल हर बस्ती का एक नॉर्मल झगड़ा बोलिए, वट एवर यू कैन कॉल इट, बट सिंस वी आर स्टडिंग इट, यही सब एक दो फैक्ट है, तो यही सब मॉडर्न हिस्ट्री है, लिखिए उसमें। इन 1850s the Abors kidnapped a gold washer, and Britishers sent Captain Vetch, and Britishers sent Captain Vetch, VETCH, and the Britishers sent Captain Vetch who finally succeeded in a negotiation but finally this frequent raids and kidnapping continued. Frequent raid and kidnapping continued, and in 1911 the Abors
the Abors killed the political officer of Sadia. Killed the political officer of Sadia. Who was the political officer? Huh? Mr. Williams. Mr. William and Dr. Grierson. Williams and Dr. Grierson. क्या क्या लिखे हैं? The Abors killed the political officer of Sadia, Mr. William and Dr. Grierson. Right? यही इसी को बोलते हैं आप लोग एंग्लो अबोर वार. मेमोरियल भी बना हुआ है इसका. फाइन, इसका मेमोरियल भी बना हुआ है उस एरिया के जो है. इट्स द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, सो ये हो गया आदि इसका कंसेप्ट. उसके लिखिए आफ्टर दिस in 1912 Britishers sent 3,000 troops. In 1912 Britishers sent 3,000 troops with some 4,000 Naga coolies. 3,000 troops with some 4,000 Naga coolies, and the group was led by Hamilton Bower. BOWER. The group was led by Hamilton Bower, and by 1913 and by 1913 1913 and by 1913 बताइए क्या होगा, कौन जीता कौन माना? 3,000 आदमी भेजा था, उतना पॉपुलेशन में नहीं होता होगा. फाइन, और 4,000 कुली ऊपर 7,000 लोग. बात समझ में आ रहा है? कौन जीता होगा? एडिथ नीचे देख रहे हैं आप, बोलिए. एंड फाइनली बाय 1913 Abors yielded. आप सरेंडर लिखेंगे तो खराब पा लीजिएगा ना. तो Abors yielded and a compromise was reached. Abors yielded and a compromise was reached. ठीक है, उसके बाद Abors का हो गया कहानी. फिर आइए फटाक से खामतीज. KHAMPTIS. Khamtis showed sign of insubordination. Khamtis showed sign of insubordination. Khamtis showed signs of insubordination, and the British rulers deprived them of their gun license. The British rulers deprived them of their gun license, and finally in 1839 Khamtis attacked and killed Colonel White. Colonel White. ठीक है, देखिए इधर नाम याद करना पड़ेगा. मैं सब फॉलोइंग. ठीक है, तो खामती ना तो व्हाइट. ओके, और क्या उपाय सही ना. खामती है, व्हाइट
हैमिल्टन बावर, अबोर्स बावर ना, तो हैमिल्टन बावर, ये नहीं कि हैमिल्टन बावर मर गया, हैमिल्टन बावर ये लोग को मैंने यील्ड करा दिया, राइट, दे यील्डेड। उसके बाद मरा कौन, विलियम न्यूएल विलियमसन, राइट, एंड ग्रियर्सन। ग्रियर्सन का नाम याद रखिएगा, जनरली हर जगह विलियमसन मिल तो जाएगा, लेकिन ग्रियर्सन जनरली मेंशन नहीं है, राइट। सो ब्रिटिश रिकॉर्ड में ग्रियर्सन एंड टू, बोथ ऑफ देम वर किल्ड। कहानी यह है कि ये लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में मार दिया। जैसे अब अबोर्स यील्ड कर गए ना, तो इज्जत तो चला गया, तो इज्जत जो चला गया तो सीनियर लोग बोलेगा ना, अरे क्या बोले, वाया था, बोले थे लड़का लोग को कि उसको खाली बैठाना है, लेकिन लड़का लोग उसको मार दिया। हम लोग का उसमें गलती नहीं था, लेकिन नया नया नौजवान खून लोग मार दिया, उसको क्या किया जाएगा, झेलना पड़ेगा। देखिए, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज करा दिए, मतलब हार गए, लेकिन नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज। एंड ऑब्वियसली कैसे जीतेगा आप, 7000 फोर्स इज टू मच, राइट। एनीवे, सो दिस इज, अब हार जीत तो इसमें कुछ नहीं है ना यार, पूरा देश में कौन जीत पाया उनसे, 1947 तक ही तो लड़ाई चली ही ना, उसमें उतना खराब पने वाला कोई बात नहीं है, इट इज नॉट, राइट। एनीवे, गन लाइसेंस खामतीज का ले लिया, फिर लिखिए लास्ट में, फाइनली Khamtis, Khamtis were pardoned. Finally, Khamtis were pardoned, and they were allowed to settle. Finally, Khamtis were pardoned, and they were allowed to settle in Sonpura. Sonitpura. Where is Sonitpur? Which part of Assam? लिखिए सोनपुरा, नॉट सोनितपुर, लिखिए सोनपुरा। एंड खामतीज वर अलाउड टू सेटल इन सोनपुरा, करेक्ट। प्लेन्स में उनको भी मौका एक दे दिया गया, डन। उसके बाद लिखिए लास्ट में सिंघफोस, लास्ट में सिंघफोस helped the Burmese invader. Singphos helped the Burmese invader during the Anglo-Burmese War. During the Anglo-Burmese War, and they captured some 7,000 Assam slaves. And they captured some 7,000 Assam slaves. But again, finally, Britishers conquered the Singphos too. The Britishers conquered the Singphos too. Okay. ये सारा का सारा घटना कहां से कहां तक चल रहा है, वही 1840 से लेके लास्ट में जाता है अबोर वार्स तक। तो कुल मिला के जो 40s, 50s, 60s का जो टाइम पीरियड है, सारे ट्राइब के साथ मोर और लेस सेटलमेंट इज रीच्ड। और लाइन से यहां से शुरू होते हुए यहां तक ब्रिटिशर्स ने सबको बोला कि ठीक है, प्लेन इतना ही पसंद है तो आके टिक जाओ। तो निशीज लोग को भी यहाँ अलाउ कर दिया लखीमपुर के पास। आबोर्स लोग तो किंग ही था पूरा का पूरा, बोला कि आराम से रहिए, क्यों अननेसेसरी हेडेक करना है, दादा मार के नहीं बैठना जरूरी है ना, दादा मार के अपना एरिया में बैठिए, बॉर्डर क्रॉस करके तो दादा मारना ठीक नहीं है ना। यहाँ से किडनैप करके ले आए लोग, फिर बाद में क्या हुआ, ट्रेंड उल्टा हो गया, यहाँ से किडनैप करके लोग बॉर्डर में बाहर लेके जाने लगे, करेक्ट। सो ये किडनैपिंग ठीक नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिशमीज, गायब है। मिशमीज का क्या कंसेप्ट है, अहोम्स के लिए दे वर वेरी मच लोयल, बाकी ट्राइब लोग अहोम्स में भी उतना लॉयल्टी नहीं दिखा रहा है, करेक्ट। दे आर okay, fine, we are having good deals, no problem. But Mishmis are very loyal because Mishmis were used to be priest in the Kamakhya temple also. Idu Mishmi priest were present. But Mishmis लोग का nature, signature दोनों बदल गया the moment Britishers come into the front, correct. So ये एक point है जो बाद में हम लोग देखेंगे। एक लिखिए SBI observation, यहाँ से फिर again we are entering into the domain of males. SBI observation and write Lieutenant Governor LT Goff, Lieutenant Governor
Lieutenant Governor of Bengal, Lieutenant Governor of Bengal administered Assam from Kolkata, administered Assam from Kolkata, and it was realized that the reorganization of this region was very, very important. But the problem was that the entire northeast was not profitable for the Britishers. The entire northeast was not profitable for the Britishers. So the areas with less prospect of trade, were rejected. So finally, we have a good Anglo-Khasi relation. We have a good Anglo-Khasi, Anglo-Garo relation, because their trade route connected Brahmaputra Valley to the Surma Valley, connected Brahmaputra Valley to the Surma Valley. Surma मतलब बराक रिवर. हाँ, this is the Brahmaputra. करेक्ट, यही है ना. तो इनके साथ रिलेशन अच्छा है, करेक्ट है. इन अरुणाचल प्रदेश लिखिए, इन अरुणाचल प्रदेश the Britishers thought about three trade routes. The Britishers thought about three trade routes. Three trade routes. First, what is this trade route known as? दिरांग जोंग एरिया, राइट. दिरांग ट्रेड रूट, फर्स्ट वाला. तवांग होते हुए, बुमला होते हुए तिब्बत. अरे ट्रेड करना पड़ेगा ना यार. तो इस रीजन को पहली बात तो रीऑर्गेनाइज करना है. बट रीऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे? जो बेसिस हम लोग को ज्यादा फायदा दे. तो फायदा देने के लिए इफ ब्रिटिशर्स वांट टू हैव ट्रेड विद तिब्बत, देन ओनली यू नीड टू डेवलप दिस दिरांग जोंग रोड, करेक्ट. And that time Britishers were having a good trade with Tibet, which did not last long, right? Which was very short lasting, which did not last long. So Britishers ने बोला कि यहाँ तो मेहनत करना ही पड़ेगा. इनके साथ हमने ट्रीटी की ठीक ठाक. ब्रिटिशर्स ने कल हमने देखा, ये सुनो, मेघालय के साथ ट्रीटी हुआ, लश्कर्स वर साइन, जिम्मादार्स वर साइन, करेक्ट. तीरथ सिंह के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ. बाकी जो एरिया है उसके ऊपर उतना फोकस नहीं है. तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रिटिशर्स ने तीन रूट निकाले जो इकोनॉमिक पर्पस से ठीक है, और उन एरियाज को हम लोग को गवर्न करना इज इंपॉर्टेंट. तो द फर्स्ट रूट अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स वर द दिरांग जोंग रूट, ट्रेड रूट. उसके बाद जो सेकेंड रूट है, वो सेकेंड रूट कहां से जाएगा? अबोर कंट्री से. दिहोंग वैली लिखिए, दिहोंग वैली रूट. द सेकेंड रूट वाज द दिहांग रूट और दिहांग वैली रूट. And the third was obviously the Lohit route, right, via the Mishmis Lohit route. Dirang Jong, Dihang Valley route and the Lohit route, correct. Lohit route. फर्स्ट पॉइंट पे आइए. अब यहाँ पे है तवांग के राजा. सो तवांग के किंग पहले ही से ट्रेड होता था यहाँ.
तो तवांग के किंग ने बोला कि ठीक है ब्रिटिशर्स, पैसा चाहिए हम लोग को, रूट तो बना हुआ है, उसमें हेडेक करना नहीं है। सो इमीडिएटली ही अग्रीड। सो दिस रूट इमीडिएटली ब्रिटिशर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इस रूट को सिक्योर करने में, करेक्ट। फिर आ गए आप अबोर्स पे। तो अबोर लोग का कहानी यह है कि अबोर्स वर सुपीरियर इन दिस रूट, एंड ब्रिटिशर्स के बीच में जो कमिटी बैठी उसने बोला कि यार ये लोग रिस्की लोग हैं, इनका रिलेशनशिप तिब्बत के साथ कभी अच्छा होता है, कभी रिलेशनशिप खराब हो जाता है। और अबोर्स और तिब्बत का भी वार ठीक ठाक वहां पे हम लोग को पता चलता है, थोड़ा बहुत माने डिफेंसिव और ऑफेंसिव अलायंस है अबोर्स का तिब्बत के साथ, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के इन हाउस जो कमिटी है उसने बोला कि यार लेट अस इग्नोर दिस पर्टिकुलर रूट, दे आर नॉट पीपल टू हैव फ्रेंडशिप विथ, मतलब इनकी दोस्ती इनका दुश्मनी दोनों ठीक ठाक नहीं है, इसको जाने देते हैं हम लोग, रिस्की लोग हैं है ना, लेट अस गो दैट। तो लेट अस, यहाँ पे इस पे डिसीजन पे बात नहीं हुआ। मिशमीज के केस में यह हुआ कि मिशमीज उन लोग को मिक्स्ड सिग्नल दे रहे थे, मतलब ऐसा बोल के भी बोला नहीं है ना, और बोलने के बाद भी ऐसा बोला है ऐसा भी नहीं बोला है, करेक्ट। तो क्या बोला है मिशमीज ने पता नहीं चल रहा है ब्रिटिशर्स को। सो ये रूट भी ऑल टुगेदर ब्रिटिशर्स दे लेफ्ट दिस पर्टिकुलर रूट आल्सो, करेक्ट। राइट वन लाइन। द राजा ऑफ तवांग quickly recognized British, the Raja of Tawang quickly recognized British policies in 1854, British policies in 1844, and as it was already a old route, as it was already a old route, so it was full of traffic already. It was full of traffic. Second, the second route passed through the Adi belt or the Abor belt. The second route passed through the Adi belt, but the Adis were having offensive and defensive alliance with the Tibetans. But the Adis were having offensive and defensive alliance with the Tibetans. So Britishers decided to ignore this route. So the Britishers decided to ignore this route for development. To ignore this route for development. And the third Lohit route. And the third Lohit route passed through the region of Mishmis. Passed through the region of Mishmis. Mish, Mishmis. Who were always loyal to the Ahoms, who were always loyal to the Ahoms, but surprisingly, they were hostile. They were hostile against the Britishers. Here, towards the Britishers, they were hostile towards the Britishers. Therefore, the condition in these two regions, were not peaceful. So Britishers decided not to develop. So the Britishers decided not to develop these two routes. So the Britishers decided not to develop these two routes. However, local British officers continued to adventure through these hills.
लास्ट एक और लिख लीजिए जब लिख ही रहे हैं तो। मीनवाइल नागाज who were already having a good time as they got land grants known as khats खत क्या था? नेगोशिएशन कॉम्प्रोमाइज था, है ना, अहोम्स के साथ कि भाई देखो अभी तुम भी रहो आराम से, लैंड रखो, हम अपना लैंड जो अक्वायर किए थे तुमको दे दिए, अब इधर उधर घुसने का काम मत करो, आराम से खेती करो, शांति से रहो। तो उसको बोलते हैं खत। Nagas who were having good relationship with the Ahoms as they got land grants showed resistance towards the Britishers as in 1875 they killed Lieutenant Holcombe बस इतना जानना है, they killed Lieutenant Holcombe. So last line it, so overall the attitude of tribals was not friendly with the Britishers. अब मेंस का एक टॉपिक लिखिए, हाउ ब्रिटिशर्स डेल्ट विद दिस प्रॉब्लम्स। जैसे मेंस में अगर क्वेश्चन आता है राइट कि राइट अ नोट ऑन द ब्रिटिश पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू, या राइट अ नोट बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ ट्राइब्स विद द ब्रिटिशर्स। सो ये तो पॉलिसी हम लोग सारे ट्राइब्स का दो लाइन बता दिए ना कि प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया इसका काउंटर? कुछ तो करेगा ना ब्रिटिशर्स। पहला तो उसने डिसाइड कर लिया कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू डेवलप दिस रीजन, वी आर गोइंग टू डेवलप ओनली वन रीजन, बाद बाकी लोग रिस्की है। जब रिस्की है तो नॉन इंटरफेरेंस तो है, पर नॉन इंटरफेरेंस के साथ साथ अपना जो इंटरेस्ट है उसको तो बचाना पड़ेगा ना। जैसे नागा बेल्ट में अपना जो इंटरेस्ट है, ये प्लेन्स के लिए दे आर फ्रीक्वेंट इन्वेडर्स, तो लिखिए ब्रिटिश दो पॉलिसी लेकर आए ब्रिटिश यहाँ पे, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग इसको आइसोलेशन के टर्म्स में पढ़ते हैं, बट दिस आर इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। यू कैन राइट दैट कि ब्रिटिशर्स काउंटर्ड दिस problem by first launching Christianity, spreading Christianity, introducing Christianity, you can say introducing Christianity, and secondly raising units of frontier constabulary means नागा से ही कांस्टेबल लेने लग गए लोकल पुलिस स्टेशंस में। फाइन कि गांव का ही एक दो आदमी को पुलिस में ले लो, जिससे क्या होगा, गांव के लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहेगा, गांव का लोग भी मजबूर हो जाएगा कि अरे अपना आदमी भी तो यार काम कर रहा है, तो कुछ कोऑपरेट किया जाए इन लोगों को। तो ब्रिटिशर्स ने दो पॉलिसी लेकर आई। कब का बात है ये? माय फ्रेंड मिड 19th सेंचुरी वी आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट। सो क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड बाय व्हिच एक्ट? 1333-53। Christian missionaries were allowed by which act? 33। They are allowed to operate। कितना लाख रुपया दिया गया? 1 लाख कि फैलो। तो 1833 में शुरुआत अगर होता है तो ऑब्वियसली 10 साल 15 साल 20 साल तक मदद होता रहेगा, बट दिस पॉलिसी वाज नॉट सक्सेसफुल। आर यू गेटिंग इट? ये पॉलिसी नॉर्थ ईस्ट में सक्सेसफुल नहीं हुआ क्रिश्चियनिटी का
और कॉन्स्टेबलरी का। तो नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी ब्रिटिशर्स की वजह से नहीं आया, नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी बहुत लेट रिसर्जेंस हुआ है उसका, सोसाइटी और रिलीजियस में हम लोग उस चीज को देखेंगे थोड़ा सा। बट अभी के लिए पॉइंट ये समझना है कि ये लॉन्च तो किया इन लोग, लिखिए, बट नॉट दैट सक्सेसफुल, but they were not that much successful, but were not successful, but were not successful. And a person becomes important, prelims के लिए फैक्ट आ गया, ओके, a prelims fact is here, एक आदमी का नाम यहाँ पे आता है, उस आदमी का नाम है मनीराम दत्त, ठीक। मनीराम दत्त 1857 में इनको हैंग किया गया था असम में, और ये कहावत ये माना जाता था कि नागाज लोग को भड़काने का ये काम करते थे, फाइन। और टी प्लांटेशन जब हुआ तो टी प्लांटेशन को लेकर भी अननेसेसरी झूठा झूठा कंट्रोवर्सी फैलाने का काम मनीराम दत्त किया करते थे। सो दिस इज व्हाई मनीराम दत्त इज आल्सो बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। और यही टाइम है मनीराम दत्त के टाइम का बात है कि मनीराम, कुछ लोग मानते हैं, आसाम के लोग उस रीजन के मानते हैं कि टी वाज डिस्कवर्ड बाय मनीराम दत्त ओनली। टी कब डिस्कवर हुआ आसाम में? अराउंड 1850, फाइन। और 1853 में फर्स्ट टी कंपनी बनती है सबसे बड़ी गवर्नमेंट की। तो उस समय टी जब डिस्कवर हुआ तो टी पहले जंगलों में जमता था, हिल स्लोप पे जमेगा ना टी। सो टी जब स्लोप पे जमेगा तो ट्राइबल एरियाज विल बी कैप्चरिंग द ट्राइबल एरियाज, करेक्ट। So this was discovered by Maniram Dutt also. Maniram Dutt is a famous person which you have to just keep in mind. He is a freedom fighter from Assam, correct, and he is responsible for little bit playing the role of controversial person in Nagas in tea plantation and Assam and Arunachal का border में है, लगभग मनीराम दत्त का नाम ध्यान रखना है, कैजुअली ऊपर जानना है, बस नाम खत्म, करेक्ट। बात समझ में आ रहा है? लिखिए, एक लाइन और लिखिए। So overall this particular time period, overall this time period when tea was discovered in Assam, tea was discovered in Assam 1850s, bracket में 1850s, comma, the Abors, the Mishmis and the Nagas, the Abors, the Mishmis and the Nagas, they carried on trade. The Abors, the Mishmis and the Nagas, they carried on trades with the plains. They carried on trade with the plains and while going towards the plain, they sold copper pans, comma, ornaments, copper pan, pan, copper pan, comma, ornaments, which they have obtained from China, to the plains for sale. Correct, full stop. But as the tea was discovered,
as the tea was discovered, ब्रैकेट में by मनीराम दत्त ऐसा believed है, by मनीराम दत्त, as the tea was discovered by मनीराम दत्त, the tribals started encroaching, but as the tea was discovered by Maniram Dutt, the tribals started encroaching the tea plantation. The tribals started encroaching the tea plantations, and now opening the tea plantation beyond the borders involved the government, beyond the borders involved the government in a troublesome dispute, involved the government in a troublesome dispute with the frontier tribes, with the frontier tribes with the frontier tribes and the remedy was decided, the remedy was decided, the remedy was decided in complete isolation, in complete isolation of क्या, किसको, complete isolation of the tribals. The remedy was decided in the complete isolation of tribals. Are you getting it? जब टी डिस्कवर हुआ तो टी डिस्कवर होने के बाद अब ट्राइब्स लोग घुसने लगा इंक्रोच करने के लिए. टी जब डिस्कवर हो गया so tribes they started coming down. Once they started coming down, it created a complicated sense of relationship. जब टी का ट्रेड ब्रिटिशर्स के लिए अचानक से इकोनॉमिक ट्रेड निकल के सामने आ गया और लार्जेस्ट कंपनी बनी असम टी कंपनी 1852 में, फर्स्ट टाइम सबसे लार्जेस्ट, और प्राइवेट इंडिविजुअल कल्टीवेशन ऑफ टी स्टार्टेड, सो ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट अराइज्ड. वंस द ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट अराइज, दे एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टाइम कॉन्फ्लिक्ट. इन ऑर्डर टू सॉल्व द लॉन्ग टाइम कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिटिशर्स ट्राइड दिस दैट, जने तेने करके ट्राई किया गया, बट इट वाज टू नो अवेल. एज ए रिजल्ट ब्रिटिशर्स ने एक ही रेमेडी सोची कि नाउ हैज टाइम हैज कम for complete isolation of the tribals. Okay, so what was the outcome? The outcome was 8 March 1873. We see the first topic of mains, that is inner line regulations. Therefore on 8th March 1873, therefore on 8th March 1873, inner line regulation was enacted and a kind of political coventry, माने लॉकअप, पॉलिटिकल लॉकअप जिसको बोलते हैं, a kind of political coventry was provided, political coventry was provided to the tribes, political coventry was provided to the tribes. क्यों? क्योंकि इसी समय पे बोला डलहौजी ने कि the game is not worth the candle, we are not going to gain anything by fighting with them time and again, so इधर से कोई नहीं जाएगा, करेक्ट, और आपस में अग्रीमेंट है, उधर से भी कोई नहीं आएगा फालतू. बात समझ गए? बॉर्डर पे बाजार लगेगा, जैसे हर ठंडा के मौसम में मिश्मी लोग सदिया बाजार करने आता था, सदिया में ठंडा का मौसम है ऊपर, अब 65 में फंस जाएगा ना यार जाके,
So you are coming to do trades, winters में missionaries are coming down, and once everybody is coming down, Britishers ने सोचा कि अब इस एरिया को बंद करते हैं, non interference, no regulation, correct, completely stop this area, draw a line and nobody crosses this line. So nobody will cross, no problems will be created, they will also not be coming, and we will be giving them complete isolation. Are you getting it? So यहाँ से शुरुआत होता है इनर लाइन परमिट सिस्टम का, ILP जिसको हम लोग बोलते हैं, होगा। और बार बार हम लोग एक ही चीज जानते हैं वन लाइनर में कि टू प्रोटेक्ट द टी इंटरेस्ट, राइट, ILP वाज लॉन्च्ड, फाइन। तो यही है कहानी। मनीराम दत्त इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। कुछ लोग मानता है मनीराम क्योंकि वाइल्ड में जमता था, इंडिजिनस है टी असम में, करेक्ट, इट इज इंडिजिनस टू असम। तो यहाँ से ILP का कंसेप्ट हम लोग का शुरू होता है इस केस में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट में क्या है ब्रिटिशर्स को? इनर लाइन और रेगुलेशन। तो इनर लाइन रेगुलेशन किसके लिए है? ब्रिटिशर्स के लिए है। ब्रिटिशर्स कह रहा है कि हमारे तरफ से nobody will go there, correct, nobody will cross this particular boundary, we are not going to go across that particular part, and nobody else will be allowed to go in that region. If nobody goes, no problem is to be created. तो हमारा जो सिलेबस जब आप मेंस का निकालिएगा, करेक्ट, once you pick out the syllabus of mains, the first topic that is there is बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन इनर लाइन परमिट इन 1873 जिसको हम लोग कहते हैं। इट इज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फाइन है। तो सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है ILP। टेक अ ब्रेक एंड वी रिज्यूम अगेन फ्रॉम दिस पार्ट ऑनवर्ड्स, फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ वी रिज्यूम। किसमें? कौन सा किंग? पुरिंदर सिंह तो, अरे तो ट्रीटी तो साइन हो गया ना, वो लोग चला गया, बर्मा वाला लोग चला गया, अब ब्रिटिशर्स बचे। अहोम्स वाले लोगों ने ही बुलाया था ना दोनों को, तो बोले कि अब तुम संभालो, हम लोग जीत गए, मामला सॉल्व हो गया, मोहमारिया रेबिलियन को हमने दबा दिया, नाउ यू कंट्रोल योर टेरिटोरी। पुरंदर सिंह को बोला, पुरंदर सिंह से चला नहीं, तो पुरंदर सिंह जब चला नहीं तो 1838 में पुरंदर सिंह से ले लिया वापस। वही है दीवान दत्त, दीवान थे, दत्त हो गया, एक ही है, सब एक ही है दोस्त, एक ही तो नाम है। नोट्स में मोस्टली मेंस वाला टॉपिक है हिस्ट्री में, है ना, और जो क्लास नोट्स है उसमें प्रीलिम्स वाला टॉपिक है। इससे बियॉन्ड नहीं पूछेगा, आप कुछ भी लिख लो, कहीं भी जाओ, कोई भी एग्जाम दे दो। थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करे तो ज्यादा मजा है, सिंपल पूछने से मजा नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो मजा है।
Okay. So if the question is asked, suppose a statement based question is asked, ki the objective to bring inner line regulations were, right? The objectives to bring inner line regulations were launched by the Britishers for, okay, for A, B, C or D. Inner line क्या है? The policy of non-interference. Inner line is a policy of no regulation, correct? So this policy of no regulation, this policy of non-interference by the Britishers showed via ILP is A, B, C, D. Interpretations है ना? So as a nationalist, what should be the answer? As a nationalist perspective, from a nationalist perspective, benefit for the Britishers. As an imperialist perspective, मतलब from the Britishers point of view, ए ना कि तो व्हाइट मैन्स बर्डन है, तो आप लोग को हमको माने हम जैसे आप देखिए अमेरिका और इंग्लैंड में जो एब ओरिजिनल्स के साथ ट्रीटमेंट था, दे वर नॉट इवन गिवन द राइट्स, करेक्ट, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. वहां पे अपने ट्राइबल्स को लोग डिसरिगार्ड करते थे उनके राइट्स को. सो इंडिया के केस में ये बोलना कि दोनों के लिए बेनिफिट है, ये तो वही प्रो ब्रिटिश वाला बात हो गया, करेक्ट. तो एक लिखिए एसबीआई ऑब्जर्वेशन, आईएलपी सबसे पहले, आईएलपी 8 मार्च 1873 में भी डेट थोड़ा पूछ दे तो जो भी है, आईएलपी 1873, और उसमें एक लिखिए एसबीआई रीजन में कि it was, yeah, it had nothing to do, it has nothing to do with the benefit of the tribals, it has nothing to do with the benefit of the tribals, because
It was done for their own, for the Britishers' own convenience. It was done for the Britishers' own convenience and not for the good of the people, and not for the good of the people. Because during the 19th century, the policy of US and UK, the policy of US and UK towards their aboriginal tribes, towards their aboriginal tribes, were very disrespectful. and and therefore the policy of ILP initially had the policy of ILP initially nothing to do had nothing to do for the benefit of the tribals, for the benefits of the tribal, and it rather frustrated the tribal group. In 20th century, by the beginning of the 20th century, you can write, by the beginning of the 20th century, US and UK changed their perspective and started sending investigators and anthropologists started sending investigators and anthropologists to write monographs on the tribe, but the tribals of Nefa and Arunachal Pradesh, was the last to be touched, was the last to be touched, Full stop. The first anthropologist who came and stayed for 1 year, was Heimendorf, who has written some very authoritative works on the tribals, known as the Himalayan Barbary, the Naked Nagas, etc. इनका एक किताब वो भी है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी है, बहुत अच्छा किताब है. इनका बारे में सर्च कीजिएगा, राइट, हिज बुक्स अरुणाचल, नो द नेम, दे विल आस्क यू द नेम इन योर एग्जामिनेशन. फाइन. अथॉरिटी माना जाता है इनको, क्योंकि पहला आदमी ऐसा है जो आया और रुका 1 साल, राइट. आप पता नहीं विलेज में ही वाज देयर
he stayed and he has written extensively, and his books for the first time हम लोग को ट्राइब्स का जीनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, उनका ओरिजिन, इन सब के बारे में बताता है. he is the first anthropologist who came. जर्मन था, राइट, चार्ल्स हाइमेंडॉर्फ, फ्योर हाइमेंडॉर्फ नाम था. दो किताब मेन है. यूपीएससी में भी पास्ट ईयर में क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द ट्राइबल पार्ट, हिज फेमस बुक्स, एंड इन जनरल आल्सो हियर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. ये वेरिएंट एल्विन के पहले का हीरो है, करेक्ट. नाउ उसके बाद ये आईएलपी हो गया. अब इसमें समझिए एक दो चीज. आईएलपी का मतलब हो गया नॉन रेगुलेशन, करेक्ट. कहने का मतलब नो वन विल गो बियॉन्ड दिस रीजन. इफ नो वन विल गो, नो वन विल रेगुलेट, फाइन, नो वन विल रेगुलेट इट. लेकिन रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट. So, इस केस में रेगुलेट करने, रेगुलेशन इन द सेंस कि उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है हमको मतलब नहीं है ना. लेकिन अगर आपको उसके अंदर जाना है तो देयर इज वेरी लिमिटेड 1 2 3 4 एरियाज ओनली बाय व्हिच यू कैन एंटर दैट पार्ट. और एक पॉलिसी होती है जिसको बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपके दो दुश्मन, आपके एक दुश्मन है, फाइन, और आपको दुश्मन से लड़ाई करनी है. तो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. जैसे दुश्मन ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप उसको तुरंत दूसरा थप्पड़ मारिएगा, होगा क्या उससे? इमीडिएट सेटिस्फैक्शन ही होगा. बात बाकी तो बेइज्जती, बेइज्जती इन द सेंस कि आप हल्का हो गए ना उसके सामने. थप्पड़ ऐसा मारिए कि उसके उठे नहीं, टेक्निकली, करेक्ट. यू हैव टू नो योर अपोनेंट कि वेदर दे आर हियर टू स्टे और दे आर हियर ऑन ए शॉर्ट ट्रिप, फाइन, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिस्पॉन्ड, फाइन. सो जब ट्राइबल में कुछ प्रॉब्लम आए तो ब्रिटिशर्स फॉलोड द पॉलिसी ऑफ देन एंड देयर रेजोल्यूशन. मतलब हम लोग की कोई पॉलिसी नहीं होगी, करेक्ट. देयर विल बी नो रेगुलेशन, देयर विल बी वन ऑफिसर and as per the need that officer will decide. There is no tribal policy, there is no developmental policy, there is no justice policy, there is no administrative policy. There will be a political officer and that political officer will decide the problems then and there itself whenever the problem comes. Rest of the case we are not going to touch them. अब यही political officer बाद में डिप्टी कमिश्नर बन गए. बाद in the sense once we approach the independence part they become the deputy commissioner, correct. DCs, ये पॉलिटिकल ऑफिसर. ये पीओ, तो पीओ कहां से शुरू हुआ? सादिया का पीओ, बालीपारा का नीचे का पीओ लोग, राइट, दरांग का पीओ लोग, धीरे धीरे करते करते ये पीओ लोग बन गया डीसी. धीरे धीरे ग्रेजुएशन, ग्रेजुअल हो रहा है. तो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज डालिए अरुणाचल हिस्ट्री पढ़ते समय कि नॉन इंटरफेरेंस को एकदम लिटरल सेंस में ब्रिटिशर्स ने इसको फॉलो किया. वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न. हम आपको इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड बना के नहीं देंगे. आपने किसी का मर्डर किया देन एंड देयर अ डिसीजन विल बी टेकन ऑन दैट पार्ट, करेक्ट. मींस जैसा प्रॉब्लम आएगा वैसा वैसा हम लोग उस चीज को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, करेक्ट है, फाइन. नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को आगे बढ़ना है. आईएलपी के बाद व्हाट हैपेंड एक्चुअली इन आईएलपी. लिखिए उसमें एक लाइन. ड्यूरिंग आईएलपी from 1873 to 1910, from 1873 to 1910, NEFA remained isolated. NEFA remained isolated and no research was done. However, in order to give a concrete shape, SHAPE, in order to give a concrete shape Britishers organized Assam into 6 districts. Into 6 districts. गोलपारा घुसते ही है, राइट, तो बहुत पहले है, देखा जाए तो यहीं पे है गोलपारा. कामरूप,
नगांव, दरांग, गोलपारा, कामरूप, दरांग, लखीमपुर, लखीमपुर एंड शिव सागर। शिव सागर में चराईदेव है, करेक्ट पुराना। तो 6 डिस्ट्रिक्ट बनाया आसाम में। अब देखा जाए तो ये लोकेशन वाइज ऐसे नहीं जाना है, आपको पता है लखीमपुर कहाँ है, राइट, नगांव के ऊपर लखीमपुर इज देयर, लखीमपुर के मंगलदोई और दरांग, दरांग इज मंगलदोई इटसेल्फ, फाइन। सो 6 डिस्ट्रिक्ट में आसाम को बांटा गया, करेक्ट। समझिएगा ध्यान से, टाइम पीरियड कब से कब तक का है, वी आर सीइंग द टाइम पीरियड ऑफ 1873 to 1910 because something changes in 1910, correct. So something else happens with Arunachal Pradesh in 1910 from 1912 onwards, okay. So till 1910 this time period that we are seeing, इस time period में हो क्या रहा है, एक artificial barrier बन गया ILP का, और ILP के आर्टिफिशियल बैरियर के बाद आसाम को 6 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल वो जान रहा है कि दिस रीजन हैज टू बी रीऑर्गेनाइज्ड, करेक्ट। व्हाई दिस रीजन हैज टू बी रीऑर्गेनाइज्ड? बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन द इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रीजन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड, करेक्ट। So what are the economically beneficial region? The economically beneficial region is this trade route and other trade routes are not good. तो ये ट्रेड रूट ठीक है। तो इस ट्रेड रूट को और इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, आसाम को और अच्छे से मैनेज करने के लिए, बिकॉज दे हैव टू गो साउथ टुवर्ड द सुरमा वैली आल्सो, in order to effectively manage this, they divided Assam into 6 districts, and these 6 districts were raised, and these 6 districts were raised and were now known as a province, which was led by a lieutenant governor, and the district commissioners or magistrates, and the district commissioner or magistrate were given the responsibility या were entrusted, जो भी were given the responsibility to deal with the tribal problems with respect to their borders, their borders, so in northeast NEFA was the first priority, and the second priority was the Indo-Tibetan relationship, was the Indo-Tibetan relationship. Correct. Now see here, वहां पे एक ब्रैकेट में एक लाइन लिखे, this story will be covered, Tibet wala, this story will be covered at the last, in the last class during revision, which is not important, ठीक है। लास्ट क्लास में एक डेट लिख लीजिए वहां पे, 3 तारीख को, 3 दिसंबर, ठीक है। सुनिए बात को ध्यान से।
तो इंडो और तिब्बत का कुछ रिलेशनशिप है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो रिलेशनशिप हम लोग को थोड़ा देखना है डिटेल में, कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में नहीं रिलेटेड आएगा, एग्जाम में उसका आउटकम इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम एट दिस पॉइंट हियर। अंडरस्टैंड द फिक्स थिंग्स। व्हाट इज द फिक्स थिंग्स? कुछ नहीं हो रहा है। 1873 से 1910 तक आसाम को 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया। रीजन क्या था? इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के जो डीसी हैं, ये डीसी और मजिस्ट्रेट लोग, दे विल लुक इनटू द ट्राइबल प्रॉब्लम्स इफ एनी एट द बॉर्डर, and anyone who goes beyond this region has to take permission of the DC. But in this region, no one is there. Okay, no boss will be here, no officers will be here. Tribes are left to take care on their own. Okay, no control, no regulation, nothing of such sort is there. अब आता है 1910. 1910 में कुछ होता है. What happens in 1910? Few things takes place. Example, 1910 में the region which is lying north of Arunachal Pradesh, this region is known as Tibet, and Tibet is captured by China. China not captured, basically China annexed on Tibet. But why China annexed Tibet? इसी का कहानी हम लोग को लास्ट क्लास में देखेंगे, टाइम बचने से. Correct? Why this story and how Britishers played a role in China attacking the Tibet. Okay, so this story we have to see. End result क्या है 1910 में कि चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया. जब चाइना तिब्बत को एनेक्स कर लेगा तो अगेन द प्रॉब्लम विल स्टार्ट. दलाई लामा विल escape. दलाई लामा escaped to उस समय ही आ गया ना, तो 1959 का बात है ना. उस समय चले गए मंगोल, राइट, मंगोलिया 2 साल के लिए. फिर लफड़ा हुआ, लफड़ा का सॉल्यूशन निकाला गया कहां पे? शिमला में. तो शिमला कॉन्फ्रेंस बिकम्स इंपॉर्टेंट इन 1914. शिमला कॉन्फ्रेंस में चाइनीज आर देयर, तिब्बत के लोग हैं, और इंडियन मतलब ब्रिटिशर्स आर देयर इन द शिमला कॉन्फ्रेंस. दैट शिमला कॉन्फ्रेंस, it what it did, it divided Tibet into 2 part, outer Tibet, inner Tibet, और बाउंड्री सेट किया गया. बाउंड्री सेट किया गया तो एक आदमी को बुला के ब्रिटिशर्स ने बाउंड्री बनवाई, नाम था मैकमोहन, और मैकमोहन लाइन बनवाई, लेकिन चाइना ने उस पर कभी भी साइन नहीं किया और ओरली अग्री किया शिमला कॉन्फ्रेंस में भी. शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद भी चाइनीज डिड नॉट अग्री टू दैट, एंड एज ए रिजल्ट वी गॉट दैट इन लेगेसी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. नॉट आइदर उसका ब्रिटिशर्स बोलिए या चाइना बोलिए, बट वो लोग चाइना लोग कहीं भी शिमला कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद भी हाँ कर देंगे चलिए ना, चलिए कर देंगे, बट चाइना ऑफिशियली नेवर रेटिफाइड दैट. दैट इज व्हाई द एंटायर प्रॉब्लम विद द मैकमोहन लाइन that we see in is generally present at this time. 1910 में when China started coming, Britishers realized कि now has the time to come where we have to lay attention to this region, because ऐसा क्या है इस रीजन में कि चाइना इज कमिंग साउथ. तिब्बत भी तो हिल कंट्री है ना, ड्राई लैंड है, राइट. व्हेन चाइना इज कमिंग साउथ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई द चाइनीज आर कमिंग साउथ? और क्यों यहाँ के लोग ऊपर देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब सी व्हेन इस्लाम केम हियर, करेक्ट, द पीपल स्टार्टेड लुकिंग नॉर्थ बिकॉज इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड, नीचे प्रॉब्लम ज्यादा है इस्लाम में, है ना. तो लोग नॉर्थ की तरफ देखने लगा, बुद्धिज्म की तरफ आप देखने लगेगा. बुद्धिज्म विल अट्रैक्ट यू. बुद्धिज्म is filling up that void. And once that thing was reached the pinnacle in 1910, Britishers also thought of going into this particular region because Chinese are coming into Tibet. So Britishers said, this is my territory, this can be lost easily. So after 1910, Britishers interest again was renewed, and once the British interests were renewed, we see Britishers doing some modifications in the administrative setup of Arunachal Pradesh, correct. And then we enter the second domain of administration, correct है. लिखिए एक लाइन. In 1910, once China annexed Tibet, Britishers realized the importance, and they feared about NEFA.
So in 1912, British established Assam Rifles check post. British established Assam Rifles check post in Lohit and the Siang Valley. And Lohit and the Siang Valley, उसके बाद Assam check post, Assam Rifles check post in Lohit and Siang Valley, which was placed under a governor, full stop, and the region of Subansiri and Tawang, was placed directly under the central government, full stop. In the same year, NEFA was divided into two areas. 1911-12 का बात हो रहा है. NEFA was divided into two areas, the western sector and the eastern sector. The western sector and the eastern sector. The western sector was known as Balipara and the eastern sector was known as Sadia, right? Sadia division. कब की बात है? 1911 की, ठीक है? Fine. And both of these divisions were placed under a political officer. डन. ये सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन का काम किया किसने? ब्रिटिशर्स ने. क्या किया भाई? 1911 में जब ये लोग घुसना शुरू कर दिया तो इन लोगों ने सोचा कि अब समय आ चुका है इस एरिया को एडमिनिस्टर करने का, इस एरिया को गवर्न करने का. तो अगेन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्राइबल्स. दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज अगेन माय फ्रेंड अ वार ऑफ इंपीरियलिज्म, राइट? हु कंट्रोल्स हाउ मच? ऊपर से द चाइनीज आर कमिंग साउथ, सो दे आर थ्रेटेंड, दे आर फियरफुल. बात समझ गए? बहुत सिंपल इसको रखिएगा दोस्त. हाँ, तो 1911 में सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन होता है किसका? अरुणाचल प्रदेश का, 1911. आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेज, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन कहां पे हो रहा है? द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन 1942. याद रखना पड़ेगा इसको, लिखिए. इन 1942 from Sadia division, Tirap Frontier Tract, Tirap Frontier Tract, tract माने loosely governed area, right? Tirap Frontier Tract was carved. Tirap Frontier Tract was carved out, and in 1946, from the Balipara division,
from the Balipara division. Sela sub-agency and Subansiri area was carved out. Subansiri area was carved out 1946 में. फिर लिखिए going forward in 1948 the remaining Sadia area was further divided into Abor Hills and Mishmi Hills. Was further divided into Abor Hills and Mishmi Hills area. ठीक है. Further east in the Naga country, further east in the Naga country, further east क्या southeast, further east in the Naga country, this area was administered by a DC of Naga Hills, a DC Deputy Commissioner of Naga Hills. But in 1951 a separate district was carved out. And in 1953 it came to be known as नागा. कहाँ होगा? यही होगा. फाइन, करेक्ट. So this particular region was known as Naga Hills area. नागा हिल को 1971 में तोड़ा गया, करेक्ट. और तोड़ के जो एरिया बनाया गया उस डिस्ट्रिक्ट को बोला गया टुएनसांग डिवीजन. नागा हिल डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कब? 1971 में. और एक को नाम दिया गया टुएनसांग डिस्ट्रिक्ट. करेक्ट है. बहुत सिंपल. इसको क्रोनोलॉजी में समझिएगा, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा. हो गया? क्लियर? नाउ उसके बाद लिखिए इन 1954 the divisions were given the names. बोलिए क्या क्या नाम दे दिया गया? सेला बन गया, नदी के नाम पे हो गया. The divisions were given the names of their rivers, right? So this division became Coming division. This division became Subansiri division. This division became Siang division. This division became 1954 we are talking about. Lohit division, Lohit और Tuensang division. करेक्ट. लिखिए
in 1954 they were divided on the names of the rivers, on the names of the river basin कर दीजिए, basin तो नहीं, on the names of the river, they were divided on the names of the river as Kameng division, Subansiri division, Siang division, तिराप डिवीजन, मिसमी भी तो है, मिसमी को क्या बोलेंगे, लोहित डिवीजन, फाइन, लोहित डिवीजन एंड तिराप डिवीजन, करेक्ट, एंड द ट्वेनसांग डिवीजन, एंड द ट्वेनसांग डिवीजन, फाइन, ट्वेनसांग 1954 होगा। नेक्स्ट, in 1956 Tuensang division was merged into Naga Hills, and they were collectively known as Naga Hills and Tuensang areas. They were collectively known as Naga Hills and Tuensang areas. फाइन, समझ के बाद अब इसको कैसे भी याद रखिएगा, बहुत सिंपलेस्ट तरीका में खोज के फाइनली आपको बताया गया है। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, गिव मी द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन। नेफा and NHTA are of same block, they are of same group, correct, incorrect? Both are different, right, and both were guided by different laws. NHTA बिल्कुल अलग लॉ से ब्रिटिशर्स गवर्न करता था और नेफा को बिल्कुल अलग लॉ से ब्रिटिशर्स गवर्न करते थे। बोथ हैड नो रिलेशनशिप विथ ईच अदर, करेक्ट। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको दिमाग मत रखिएगा कभी भी, बात को समझिए क्या है कहानी। ये कहां से शुरू हुआ, कहानी शुरू हुआ 1873 से। 1873 में इट वाज डिसाइडेड कि दिस पर्टिकुलर रीजन it will be an untouchable region, okay, and as it is an untouchable region, in order to ensure this untouchability 6 districts of Assam were created south of Arunachal. This 6 district DC were given the responsibility to check the inner line thing, okay. This situation continued till 1910. In 1910, once China started coming south, Britishers started going north, and it was for the first time it was realized that now has the time to come to organize this particular region into a better region, correct. We have to organize this particular region smartly. In order to organize this region, in order to organize this region in 1911, एंटायर अरुणाचल प्रदेश, जो प्रेजेंट टाइम का अरुणाचल प्रदेश है, जो नेफा जिसको बोलते हैं, उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, बालीपारा, सादिया, ओके। नेक्स्ट ईयर तिराप came out of that part, 42 में तिराप was taken out. So now there are 3 things, बालीपारा, सादिया and तिराप. After that बालीपारा is divided into Subansiri and Sela, got it. After that सादिया, जो बचा हुआ सादिया है तिराप अलग होने के बाद, उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, अबोर हिल्स एंड मिशमी हिल्स ना। तो टोटल कितना हो गया भाई, उधर 2, इधर 3, 3 2 5, और एक और एरिया बनाया गया जिसको बोला गया टुएनसांग। तो टुएनसांग को अलग बनाया गया, टुएनसांग अलग बना, टुएनसांग फिर वापस जाके घुस गया नागालैंड में आफ्टर सम टाइम, बट होने के बाद ये सारे लोगों को इनके नदी के हिसाब से नाम दे दिया गया as per the request. So Sela sub agency became Kameng, Subansiri became Subansiri division, Abor नदी के नाम पे सियांग ना, बहुत
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है सियांग तो ना। सारा लव स्टोरी सियांग के किनारे, सारा ब्रेकअप सियांग के किनारे होता है। फाइन, ऑल द इम्पोर्टेंट कल्चर्स, पहला सिगरेट सियांग के किनारे, पहला दारू सियांग के किनारे, पहला लड़ाई सियांग के किनारे, वेरी इंपॉर्टेंट ना सियांग रिवर। बहुत सारा गाना भी बनाया दोस्त, कुछ कुछ गाना भी हमको आता है। हाँ, पासीघाट लोग तो पागल है ना, तो सियांग नहीं हो गया पता नहीं क्या हो गया। उस तरह से कितना नदी हम लोग के यहाँ देखा गया है, लेकिन हाइप है अननेसेसरी। लोग ब्रह्मपुत्र से कंपेयर कर देते हैं अपनी प्रेमिका को ना। ब्रह्मपुत्र इज मेल और फीमेल, सियांग इज मेल और फीमेल आपका कल्चर में? क्या बात है, आबोर हिल्स के लोग बताइए, यू ट्रीट सियांग एज मेल और फीमेल। ब्रह्मपुत्र, पुत्र मतलब बेटा, तो ब्रह्मपुत्र असम में मेल है, ठीक, और ब्रह्मपुत्र का नाम सियांग है अरुणाचल, तो अरुणाचल में मेल है ना फीमेल है? फीमेल है। मैंने नहीं, हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते थे हिंदी में, वही है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो एक गाना है एक बहुत सुंदर पासीघाट का कि लाइते अंगना पासीघाट ताउना प्रिमिनम काला आपिए ताउने ना, हे सुंदरी, तुम्हारा जो आंख है वो पासीघाट मतलब वो ब्रह्मपुत्र के जैसा है, सियांग जैसा है, उसको देख के हम डाउन हो गए। राइट, बहुत अच्छा लगता है तुमको देख के। तो अबोर हिल्स का नाम हो गया सियांग, मिशमीज लोग अपना नाम ले लिया लोहित, लिंक नहीं है कोई लोहित के साथ, स्टिल नदी है तो इंपॉर्टेंट है। सो लोहित डिवीजन इज, लोहित ये हो गया, कहानी खत्म हो गई, 5 डिवीजन बन गया। पांचों डिवीजन को ज्वाइंटली कहा गया नेफा, और ट्वेनसांग और नागा को बोला गया एनएचटीए। बोथ आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट लॉज। आर गेटिंग इट? तो अरुणाचल प्रदेश became a union territory finally, which year 72, and after some time it became a state. ये हो गया रफ एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन। अब इसके बाद कहानी आता है, इसमें पंचायती राज का क्या सेटअप है ना, डाइंग एरिंग। तो ये सरदार आएंगे मंडे को, सरदार इस चीज को देखेंगे, राइट। डाइंग एरिंग, पंचायती राज, राजीव सर का ये सब डोमेन है। अब खैर लिखिए, सेकंड मेंस का टॉपिक है, उसी में आईएलपी के बाद द सेकंड मेंस टॉपिक इज, देखिए, असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन एक्ट। असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन एक्ट, उसमें लिखिए, under this as the name suggests, the provisions of Indian Penal Code IPC, the provisions of Indian Penal Code, that is IPC, comma Indian Evidence Act, and other other and other laws applicable in mainland India was extended to the entire area of Balipara, Sadia, and Tirap frontier tracts,
in 1945. And via this, the responsibility of justice, and via this, the responsibility of justice was given to Deputy Commissioner, village authorities, and circle officers. And the power of policing, and some powers of policing was also given to the villagers. In these regions, करेक्ट. तो ये है असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन एक्ट. फाइन. उसके बाद सिलेबस आगे पढ़िए. उसके बाद इस टॉपिक में लिखा है असम फ्रंटियर ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1886. असम फ्रंटियर ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1886. अभी क्या होता होगा दोस्त, 1873 में आईएलपी आया, and in order to further consolidate the ILP, Assam was divided into 6 districts. Fine. So this is Assam Frontier Tract Regulation Act. Fine. This is Assam Frontier Administration of Justice Regulation Act 1945. यानी इंडिया का लॉ हम लोग इस एरिया में अप्लाई कर दिए. कब? धीरे धीरे लाहे लाहे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. करेक्ट. 1886 में नहीं अप्लाई किया. व्हाई? बिकॉज 1886 में वी आर जस्ट कंट्रोलिंग द असम पार्ट. यानी 1886 का जो लॉ है वो कहां अप्लाई हो रहा है? बस इस रीजन, असम को 6 डिस्ट्रिक्ट में बांटने के लिए. 1945 का जो लॉ है ये कहां अप्लाई हो रहा है? ये पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर रीजन में जस्टिस को इंश्योर करने के लिए किया जा रहा है. होगा मैंने हाउ द ब्रिटिशर्स इनेक्टेड इट. नाउ दिस इज फालतू है, ये पीटी के लिए बस इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ है भी नहीं इंपॉर्टेंट. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नाम से ही क्लियर है कि इंडिया का जो भी लॉ बुक है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा. थर्ड टॉपिक क्या है मेंस में? असम फ्रंटियर ट्रैक्ट रेगुलेशन हो गया. असम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन 1954. लिखिए इसको, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन 1954. हम लोग इसको पढ़े हैं. इसी में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश को 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया. फाइन. तो लिखिए इसमें, एज पर दिस लॉ in 1954, as per this law in 1954, the agencies were renamed after the rivers. And these agencies were now known as frontier divisions. And by this law, this region was given a nomenclature as, क्या बोला गया? नेफा. दिस रीजन वाज गिवन अ नोमेनक्लेचर. नाम इनको पड़ा नेफा नाम. तो नेफा नाम किस बेसिस पर आया दोस्त? 1954 में नाम पड़ा. किसको बोला गया फ्रंटियर डिवीजन? कामेंग फ्रंटियर डिवीजन, राइट. सुबानसिरी फ्रंटियर डिवीजन, सियांग फ्रंटियर डिवीजन, लोहित फ्रंटियर डिवीजन एंड तिराप फ्रंटियर डिवीजन. अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना है, टुएनसांग इज नॉट एट ऑल गाइडेड बाय नेफा. टुएनसांग एरिया इज गाइडेड बाय एनएचटीए. ओके. तो पहला चीज पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से अगर आता है तो
तो सबसे पहले नेफा नाम कब पड़ा? तो 1873 में नहीं पड़ा था. ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस दे गॉट द नेम नेफा. उसके बाद लिखिए वाया दिस एक्ट it was decided to shift the headquarters of these divisions from the foothills to the interior of the hills, and for that Bomdila सुबनसिरी का हेडक्वार्टर 0, बॉम्डिला 0, सियांग का पासीघाट. वाह अकूप गेस मारिए. एनीवन? व्हाट वाज द हेडक्वार्टर ऑफ 1954 में डिसाइड किया गया ना कि इंटीरियर की तरफ लेके जाओ, फुटहिल से इंटीरियर. तो व्हाट वुड बी द हेडक्वार्टर ऑफ दिस आबोर हिल्स? अरे भाई आबोर हिल्स है तो खाली आदि लोग ही मिलेगा क्या यहाँ? बाकी लोग मर गया. सबसे रंगीन ट्राइब है यहाँ गालो, राइट. और गालो का हेडक्वार्टर है आलोंग, आलो जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट. तो लिखिए आलोंग, ALONG, आलोंग. लोहित का तेजू, अब तिराप का मैच द फॉलोइंग पूछेगा, खेला, राइट. खेला KHELA, फाइन. अलोंग बॉम्डिला 0, तेजू, अलोंग तेजू एंड खेला, करेक्ट. were made the headquarters. उसके बाद once the Chinese attacked in 1962, next point इसी में, once the Chinese attacked in 1962, another NEFA regulation was enacted. Another NEFA regulation was enacted. And in order to have a uniform administration across India, these divisions were created into districts. And the political officers of each division became the deputy commissioner, DC, became the DC. And at this time the administration of NEFA was transferred, मतलब 62 के बाद was transferred from Ministry of External Affairs to the Ministry of Home, HOME, Ahom nahi home, right. So Ministry of Home Ministry, right, to the Ministry of Home, correct. ये है कहानी, करेक्ट. अब ये कहानी के बाद वक्त और जज्बात दोनों बदल जाएगा मंडे से,
क्यों? क्योंकि पंचायती राज वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, डाइंग एरिंग और ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल्स, करेक्ट। तो सरदार आएंगे वो पढ़ाएंगे, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न ज्योग्राफी एंड अरुणाचल ज्योग्राफी, करेक्ट, उसको सरदार देखेंगे। और सरदार जब अपना काम पूरा कर लेंगे तब वापस से हम आएंगे और इकोनॉमी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, करेक्ट, उसको हम लोग देखेंगे। इकोनॉमी के बाद ऊपर ऊपर उड़ा के हम लोग देखेंगे सोसाइटी, जो मेंस में जरूरी है, और बहुत अच्छे से वापस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश अलोंग विथ नॉर्थ ईस्ट, उसको हम लोग देखेंगे वाया मैप। आफ्टर दैट पार्ट इज ओवर, 3, 4, 5, 6 या 4, 5, 6, 7 हम लोग लास्ट का 4 दिन करंट अफेयर्स को देखना है। दिस प्लान इज होपफुली क्लियर, okay? So tomorrow there will be no class on Sunday, and you meet on Monday from 10 a.m. itself. Rajiv sir will be here. Fine. So thank you so much everyone. Take care. फानिया अभी का नहीं पूछ रहे हैं, उस समय खेला बना हुआ था, खेला सर्च कीजिए।